All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Just a minute. Good morning, sir. All right. Great. So, as a quick understanding, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स डिस्कस करे थे केमिकल इक्विलिब्रियम के एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने No, sir. एमटी के पेपर का भी डिस्कशन किया था. Sir, I don't think we discussed doubts. We only did the empty paper, sir. Yeah. And then yes, we did So some. we didn't do the module now. ओके ओके. तो हमारा मॉड्यूल का जो डिस्कशन है वो कहाँ तक हो पाया है? So nothing. Sir, nothing. Chemical equilibrium का कुछ नहीं हुआ. Nothing at all. No, sir. Okay. Then did I mention something in the last class कि I would discuss doubts? तो ये On भी doubt Tuesday. class है ना. टर्म क्लास में एमटी का लिया था डिस्कशन. हाँ वो तो हम लोगों ने एमटी का डिस्कशन क्लोज किया था. बट अभी मैं I think ये Wednesday को doubt class है हमारा. Yes sir. Yes. नहीं ठीक है, वेडनेसडे को डाउट क्लास है बट ये बताओ मुझे आप लोग that how is it going to be? What? एक मिनट. मैंने आपको होमवर्क क्या क्या दिया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में? FBS. FBO and FBS and 2 DPP. 2 DPPs. 37 and 38 DPP, I guess. अच्छा ठीक है. And FBS 1 to 37. एंड आप लोग ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड यू आर सेइंग कि वेडनेसडे को डाउट डिस्कशन कर सकते हैं इसका. Okay, sir. हाँ, yes sir. So, but then the homework you give this week, then that will be pending because there's a lot. I mean, हाँ तो आप लोग को ये थोड़ा ना है कि एक डाउट डिस्कस होंगे तो उसके बाद अगला कर पाओगे. So we have a class on Sunday for like 3 hours. I think 3 hours. Yes, sir. 3. So can you give us all the homework and we discuss half of it? Half the class we discuss the homework and the other half we do work. 2 hours only are. No, it's 3 3 hours. hours. It's 11 3 to hours. 2. Yeah. It is 11 to 2. It's 3. Okay. नहीं so the thing is that I want to give you more homework and Give us more homework. हाँ and I want to give that homework and discuss that homework also within this week. So So then- Sunday we have not 3 hours of a class. Yes, sir. We have 3 hours So class. then we can do is like आप लोग होमवर्क करके आओगे ना? Like On I'm Sunday. assuming Yes, sir. Obviously. Yeah. I'm assuming that पिछला वाला होमवर्क तो हो चुका है सारा. Yes. Yes. sir. डिस्कस नहीं हुआ है बट आई एम श्योर आपने अटेम्प्ट तो पूरा कर ही लिया है. Yes, sir. हाँ sir, no. So you right, so if I give you some homework based on today and tomorrow's class, you should be able to do that homework and discuss this on Sunday. Yes, sir. Yes. And so you know the TWT coming up. So any chance you said that gaseous state won't come, sir, but so in case you could add the chapter because we have zero confidence in Why that do you want chapter. to So add we it, bro? bro, we have zero confidence in the chapter. No. Might as well do Yes, good yes, sir. revision. It'll be a good If it is possible, then add gaseous. Yes. उसका अलग से प्रैक्टिस टेस्ट भेज दूंगा मैं आपके लिए. इनफैक्ट मैंने भेजे भी हुए थे. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव गिवन दोस. Sir, can you like overall? Sir, can you tell the administrator or someone to, open that previous one link of
pace online site because that had a lot of past papers. तो अभी वो एक्टिव नहीं है. नहीं, That यहाँ वो site is site, down now. that it won't site वो open. बंद हो गया. We cannot access any of the papers, and this new site has nothing except. Are you for talking modules. about Panacea? Yes, yes. Panacea is still active. You can Yes, get all yes. the papers. It is working. No, it was temporarily not working, but now it is working. Okay. Yeah. But it has started again. Yeah. Yes. हाँ तो. Okay. So let's continue our discussion of the theory. Now, in the applications of equilibrium constant, हम Sir, लोगों ने so will we discuss homework tomorrow? नहीं Okay. we'll discuss. So I'll quickly tell you how our schedule is going to be. So this is Monday, correct? Monday we are going to have lecture 5. Tuesday we are going to have lecture 6. Wednesday we are going to discuss homework 1 and homework 2. So both won't happen though. Yes, sir. There's a lot. It's not. Yeah, the So background is हाँ, good. exactly. So 1 हो जाएगा, 2 शायद नहीं. हाँ sir. हाँ, like हो 2 जाएगा. चालू हो सकता है, but मैं थोड़ा हो जाएगा homework 1 में हो तो जाएगा. मैं नहीं अपनी था. थोड़ी बेइज्जती No. करूंगा, easy question solve नहीं करूंगा, तो वो हो जाएगा. And then Sunday you will have homework 3 का discussion. All 3 The whole hours. class, it's 3 Sir, hours. all- yeah. ठीक है. So you will have और in case अगर कुछ बच जाएगा तुम्हारे जैसा लग रहा है तुमको, तो ये Sir, so homework बेइज्जती मत करना फिर sir. हाँ, फिर से बेइज्जती मत करो. ठीक I है. mean, you can if you want to, but then solve it also. So And do this. if time permits, तो यहाँ पर हम लोग lecture 7 का कुछ portion भी देख लेंगे. ठीक है. Yes. So, Okay, sir. Is lecture 3 going to be, sorry, homework 3 is going to be big or something? Homework Because like 3 hours for homework is like relatively so how big is the time. homework? हाँ, homework काफी रहेगा. अभी homework 3 जो मैं दूंगा ना, उसमें enough number of questions रहने वाले हैं. And I will give that tomorrow only, based on how much we have completed. Okay. Okay. So now looking at the applications of equilibrium constant, हम लोगों ने पहला application देखा था जिसमें we talked about reaction quotient, and it helped us understand the direction in which the reaction will proceed to attain equilibrium. The second, we talked about understanding the extent of reaction alpha, right? Definition क्या होता है alpha and how we solve it. We did a lot of questions on that second application, where we understand the approach, how to do the questions, the format, the analysis, the equations, right? Step by step method था वो. And then in the last class, we also talked about average molecular weight of a gaseous mixture, right? So that was the last application. Now, वैसे there are numerous applications of equilibrium constant. This one is talk about the concept of relative humidity. ठीक है. Now, ये term relative humidity आप लोगों ने सुना होगा पहले भी. It's not something which you are hearing for the first time. No, sir. Haven't heard. Sir, actually first time. What are you saying? कभी ऐसे टेंथ के पहले किया है शायद. weather सुना है पर forecast अभी में या किसी मैच के पहले का जो weather update होता है. So geography में क्या है sir? हाँ, geography. इसमें साइंस में भी था ये. तो सुना तो होगा ही सही आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सुना नहीं होगा. हाँ सर सुना है. बट अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है. We are going to develop the understanding from scratch only. So as a background, notice करना, हम लोगों ने already gaseous state chapter में vapor pressure के बारे में बात करा था. तो मैं उसका recap कर देता हूँ. अच्छा, हम लोगों ने नहीं करा था एक्चुअली. गैशियस स्टेट आप लोगों ने मेरे साथ नहीं पढ़ा था, बट आई एम श्योर आपने वेपर प्रेशर टर्म तो या एक्वस टेंशन टर्म तो पढ़ा होगा. तो यहाँ पर एक क्लोज्ड वेसल है, राइट, से वॉल्यूम V एंड एट अ टेम्परेचर से T, एंड इसके अंदर आपने एक वॉलेटाइल सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट. वॉलेटाइल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल इट कुड बी वाटर, इट कुड बी आयोडीन. ठीक है, आयोडीन इज अ वॉलेटाइल सॉलिड.
Now if you give So volatile is how fast it can move. No? नहीं, volatile means from a chemistry perspective, volatile means that the substance releases its vapors. ठीक है, that is what is volatile in terms of chemistries. Can you repeat? ठीक है, volatile substance means that the substance is going to release vapors. Okay. तो जैसे आपने यहाँ पे मान लो एक कटोरी में पानी भरा, and you allow it to stay in this vessel for some time, so what will happen? There will be evaporation. ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपर फॉर्म में आने लगेंगे. नाउ जैसे ही वेपर्स आने लगते हैं तो रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन का. एंड गिवन सफिशिएंट टाइम इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन like rate forward is equal to rate backward, the rate of condensation. ठीक है. Now इस सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम आ गया है तो हम लोग कैसा बोलते हैं, the amount of substance becomes constant, the concentrations become constant. So in this situation at equilibrium, the quantity of vapor that is present in the vessel becomes constant and the pressure due to that vapor is called as vapor pressure. ठीक है, इसको हम P सबस्क्रिप्ट V से रिप्रेजेंट करते हैं. इतना हम लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर में करा था. अभी हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा और स्टडी करेंगे. पहले इतना लिख लो फटाफट. Done, sir. Okay, now from a equilibrium perspective, H2O liquid और H2O vapors के बीच में equilibrium establish हो रहा है and उसके equilibrium constant को हम लोग Kp कह रहे हैं. And the expression of Kp will be activity of products raised to the power of their coefficient upon activity of reactants raised to the power of coefficient. And for gaseous species, we replace the activity by their partial pressure. Right? तो यहाँ पर equilibrium पर H2O का जो partial pressure रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, vapor pressure. And liquid water का जो activity है, liquid का activity हम लोग कैसा लेते हैं, just 1. ठीक है. अब because from the knowledge of chemical equilibrium we understand that Kp, right, equilibrium constants, they depend only on temperature. So इससे we can infer that this vapor pressure is going to depend only on temperature. Does not matter what the shape or size of the vessel is, right? So आपने बड़ा vessel लिया, square vessel लिया, cube vessel लिया, doesn't matter. ठीक है, the shape or size won't matter as long as there is this equilibrium established. Then as per the temperature we will have the vapor pressure. Yes. Write this down. Sir, I couldn't finish writing which was above. Quick, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? Yes, sir.
Done, sir. Just a second. Done, sir. Okay. Now, So, while explaining the factors on which K depends, you had said that temperature is the only main factor, but since we are considering that activity as partial pressure and other like terms for it, we also consider stoichiometry and so those are like mathematical adjustments. Those are not true factors. so it will not affect the vapor pressure. Of course not. मतलब हम लोग equation ऐसे लिखेंगे ना, मतलब why would it be sensible to write the equation in this manner? Right. Now, ठीक है? during phase change happens at one temperature only, like melting boiling point. So like it's always same for that exactly same substance, So, right? understand, there is a difference between this equilibrium that is being established, ठीक है, versus what we have talked about as boiling. Now, notice करना, वैसे तो आगे आएगा, but boiling point इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है, अभी मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको नोट्स में, ये आगे एक और चैप्टर है जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आप लोग अवेयर नहीं हो, इसके लिए मैं बता देता हूं. व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? So the temperature at atmospheric pressure at which the liquid and gaseous phase are in equilibrium. ठीक है. So temperature at When there is no rise in there's a temperature. phase change from liquid to gas. When there is no rise in temperature. Okay. All the energy is used to break the bond. Okay. चलो मैं आपको एक दो ऐसे. So like we know, but we cannot define it so much. No, मतलब you will be able to define it. That's not a problem. अच्छा. So let me give you some examples to relate it to. अगर हम लोग let's say मुंबई में हैं, जहां पर atmospheric pressure is 1 atm, ठीक है, T external is 1 atm, तो वहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का. अगर मान लो हम लोग लेह लद्दाख में चले जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड पे, वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर से 0.8 atm है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है. Yes. इनफैक्ट इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. Yes, yes, sir. It is less than 100 degree centigrade. So the definition of boiling point is actually very much linked with external pressure. तो जो technical definition होती है boiling point की, it is the temperature at which PV is equal to P external. जो vapor pressure है, that is equal to external pressure. तो अगर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें रूम टेम्परेचर की, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर होता है कुछ आई थिंक 26-27 mmHg. दिस इज द नोटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है.
आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 760 mmHg and this is what our external pressure is, ठीक है, 180 m। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. Kind of. So I kind of get it, but don't get the feel. So we'll get in that chapter, right? हाँ हाँ, मैं अब वहीं पे डिटेल में कराऊंगा ना, अभी मैं फिर यहाँ पे आधा अधूरा कराऊंगा, फिर वहां पे करवाऊंगा, तो इट विल नॉट बी यूजफुल। अभी आपको It's not necessary to note it down, right? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, वो मैं अच्छे से वहीं पे लिख पाऊंगा। देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स व्हिच आई वुड वांट टू हाईलाइट विद दैट, Okay. ठीक है। तब मैं प्रॉपर्ली ऐसे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिस्टिंक्शन लिखाऊंगा, बताऊंगा वो सरफेस फिनोमेना है, वो बल्क फिनोमेना है। आई एम श्योर आपने सुना भी होगा ये जूनियर क्लासेस में, बट मैं Yes, sir. तभी लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी होल्ड करके रख लो। So I was disconnected. So like I wanted to ask what's written in the bracket, not on shape or size of vessel. हाँ, So like what does that mean? I was disconnected, so I didn't hear that. सो अगर आपका वेसल मतलब आपके पास बॉटल है, मिल्टन की बॉटल है, राइट, या फिर थम्स अप की बॉटल है, दोनों का शेप अलग अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज दे आर एट द सेम टेम्परेचर। उनके अंदर जो आपने पानी रखा है उसके ऊपर जो वेपर्स बने हैं, दे विल बी एक्सर्टिंग द सेम वेपर प्रेशर ओनली। Okay, okay. Got it, sir. Now, with this we can now talk about the term relative humidity. How is it defined? RH stands for relative humidity. So relative humidity in a vessel at T Kelvin, ठीक है, साथ में टेम्परेचर डिफाइन करना जरूरी होता है, is equal to partial pressure of H2O in that vessel upon vapor pressure of H2O at that temperature into 100%. So this will be the definition of relative humidity. एक बार लिख लो, एक एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। So you gave this formula on the based of, sorry, you gave this formula based on the example you gave, right? It's Yes. not necessary to be H2O. नहीं, तो यहाँ पर जो relative humidity term है, this is in the context of water vapor only. Okay, got it. The ऊपर वाला अंडरस्टैंडिंग वेपर प्रेशर तो किसी का भी हो सकता है ना, कोई भी वॉलेटाइल सब्सटेंस का हम लोग लिख सकते हैं, तो वो आपकी बात एकदम सही है। बट जैसे वेपर प्रेशर को हम लोग एक्वस टेंशन बोलते हैं, तो वो कब बोलते हैं? ओनली फॉर Water. है ना? तो वैसी relative humidity term is defined only for water. Why will 100% come then? वो परसेंटेज में डिस्क्राइब करा जाता है relative humidity. तो 100 होगा ना? नहीं, मैं बताता हूँ अभी, वही मैं एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ। लिखा सबने इतना? मल्टीप्लाई 100 Yes, से sir. किया है ना? हाँ, multiply by 100. Sir, but vapor pressure is only pressure at equilibrium, no? करेक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कितना लिखा सबने? Yes. Yes, sir. ओके, नाउ अब एग्जांपल नोटिस करना। तो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 0 degree centigrade is 15.2 torr. This is a tabulated value. Okay, this is something that we keep
इन आर हैंडबुक्स, केमिस्ट्री के जो हैंडबुक्स रहते हैं उनमें ये डेटा कोलेटेड रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या क्या वेपर प्रेशर होगा. तो वाटर तो जैसे बहुत कॉमन है, तो वाटर का तो इनफैक्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, दैट विद टेम्परेचर हाउ इज द वेपर प्रेशर चेंजिंग. ठीक है. फॉर अदर सब्सटेंसेस विच आर वॉलेटाइल एज वेल, फॉर एग्जांपल इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, तो इन सब्सटेंसेस का भी आपको डेटा मिल जाएगा. ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं. तो यू हैव वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन टू यू एज 15.2 torr, राइट. अब बोला जा रहा है कि हमने एक वेसल लिया. ठीक है. वेसल इनिशियली कैसा था? evacuated, there was nothing inside the vessel. ठीक है. It was at 0 degree centigrade only, and we introduced this salt mixture. ठीक है. This salt mixture was introduced inside this vessel, and this salt mixture is going to maintain this equilibrium. ठीक है. As per the equilibrium constant that is given to you. Now when you let this salt mixture be in this vessel for some time, ठीक है, क्या होगा? यहां पर आप नोटिस कर रहे हो इनिशियली इवैक्यूएटेड था, मतलब देयर वाज नो H2O, राइट. तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड. Right means forward, yeah. राइट. इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो once the equilibrium is attained, I am asking you what will be the relative humidity in the vessel. ठीक है. So you are like, okay, very simple. यहाँ पर this equilibrium will get established. इस equilibrium का Kp हमें दिया हुआ है. The Kp will be activity of products raised to the power of their coefficient upon activity of reactants raised to the power of their coefficient. So यहाँ पर H2O गैस है तो उसके लिए हम उसका प्रेशर लिखेंगे एक्टिविटी raised to the power of its coefficient. बाकी जो solids हैं उनका एक्टिविटी हम लोग 1 लिख देते हैं. Equating this to the Kp value, we get the answer to the partial pressure of H2O that will be inside this vessel at equilibrium. That is what the salt mixture will maintain. The value comes out to be 1.52 torr. So this is the partial pressure inside the vessel, right? And at 0 degree centigrade, what is the vapor pressure supposed to be? The tabulated value that we have seen upper, 15.2 torr. Yeah. So if I use the formula of relative humidity, that is partial pressure of H2O upon vapor pressure into 100%, I get the answer of relative humidity comes out to be 10%. समझ में आया? Yes, sir. So ये value, tabulated value should be given. The tabulated value, yes, that should be given in the question. But how are we multiplying it with 100%? तो 1 ही हो जाएगा ना? नहीं, 1.52 upon 15.2 तो 10 हुआ ना. 100 से मल्टीप्लाई करने पर 1 कहाँ से हो गया? समझा. Basically, we're just finding the percentage. Just think about that. Forget the 100%. ठीक है. So this is like a simple example of helping you understand the concept of relative humidity. ठीक है. Yes. अब there are complicated examples also, right? For example, your air conditioner is also designed to not just control the temperature of the room, but also contain the or control the relative humidity. So around 50% relative humidity is something which is comfortable to us. ठीक है. If the relative humidity is less, say 10%, 20%, then we feel dryness. ठीक है. आपको गला सूखेगा, skin dry लगेगी. That is the kind of feeling you will get. ठीक है. That happens in dry regions like राजस्थान में आप चले जाओगे, right? तो वहां पर relative humidity कम रहता है. ठीक है. अगर आप let's say बॉम्बे में हो गर्मियों में तो relative humidity ज्यादा रहता है, like
80%, 90%. तो उस केस में you feel a lot of sweating happening, lot of chip. That is also uncomfortable. So what air conditioners do is they typically try to maintain around 50% relative humidity, जहाँ पर we feel the most comfortable. ठीक है. Now, how do air conditioners do it? So that is a bit of more complicated mechanism. यहाँ पर तो मैंने क्या करा, सिंपल ऐसे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपको बताया कि हम लोगों ने ऐसे एक वेसल में सॉल्ट मिक्सचर डाला, which tries to maintain partial pressure of H2O as per its equilibrium constant. Sir, temperature and humidity are directly proportional. So, temperature and vapor pressure are directly related, not directly in fact, logarithmic relationship होता है, but yes, you can say temperature increase होता है, तो vapor pressure increase होता है. ठीक है. Relative humidity में एक और term क्या होता है? Apart from vapor pressure, you have the actual pressure, partial pressure of H2O, जो कि उस रूम में या उस जगह पर है जहां का आप मेजरमेंट करना चाह रहे हो. ठीक है. Yes, sir. So, one doubt, it might not be related, but as you told about ACs, that they control the RH till 50%. But then what is the reason that we drink less when there's AC around? Like, I feel that way, that I drink less water when I have AC on. हाँ, तो that is what ना 50%. अच्छा, तुम कह रहे हो कि बॉम्बे के वेदर के पर्सपेक्टिव से. Yeah. हाँ, तो आप बॉम्बे के वेदर में फिर स्वेटिंग भी करते हो ना. If the relative humidity is high, then you also feel that sweating. You also feel like loss of water because of that as well. Okay. So she's asking, why do we drink less water when the temperature? Yeah, actually. हाँ, तो AC की presence में आप पानी, मतलब you are not sweating, right? You are feeling very comfortable. So in that case, you then, like, the body is like, it doesn't require to replenish more and more water. अगर आप let's say बाहर हो, activity कर रहे हो, loss of water है ही नहीं. body perspire कर रही है, तो body is losing water also ना. Yeah, got it, sir. So this is going to be a horrible doubt, but in the KP calculations, how do you assume that the partial pressure SRCl to .2H2 and SRCl to .6H2 is the same? So you got it out, right? They together are establishing this equilibrium. Okay. This is one equilibrium only. Okay. Kp is just K in terms of partial pressure. So then K is actually activities now. So activity of solid is 1. So We have taken those assumptions in the starting of the chapter. Oh yeah, I didn't see the solid thingy. रिवीजन करके बैठा करो क्लास में. रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ऐसे बीच बीच I में didn't भूल see जाओगे. the solid thing. I revised some, but like I didn't see the solid small thing there. how did we get the tabulated value? Under what conditions is 15.2 torr achieved? I mean, that's like only temperature dependent. That water as a substance at 0 degree centigrade has this much vapor pressure. Oh, okay. That's like an inherent property of water. So this is the vapor pressure of what? Of water. In this sum. In this? In this sum, the 1.52 torr that we got. We'll call that partial pressure of H2. Then what is the rest? Rest, as in what rest? These solids, इनका activity तो 1 लिया हुआ है ना हमने. Then how did it come out to be 1.52 torr then and not 15.2? No. So that 15.2 torr is going to be when H2O liquid is in equilibrium with H2O vapor. Yes, sir. At 0 degree centigrade. Okay, and this is just how much vapor the salt releases. Ha. Yes.
तो हम लोग को ये वैल्यूज याद रखना है क्या, जैसे कि वाटर का एट 0 डिग्रीज? नहीं, मतलब जस्ट आपको ये याद रखना रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर इज 760 mmHg. ओके Yes, sir, that's fine. बाकी और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है. सर क्वेश्चंस में दिया रहेगा ना वैल्यू? हम्म. So, so, हाँ. so can we consider the tabulated value as like a standard, say, standard value of water? I mean, standard pressure. नहीं, Because, there is nothing like standard pressure. Standard pressure means 1 bar. मतलब I mean, like the reference points are. No, I don't know. I don't know the word exactly, but can we because because right till now I still think that relative humidity is still like a mathematical value which we find out. मतलब का कुछ हाँ. physical meaning आपने बोला कि like sweating होता है and all that, but it's still not quite clear, sir. Okay. So So relative humidity helps you understand how much vapor, ठीक है, is actually present in the vessel versus how much maximum it can be. okay, yes, sir. ठीक है. हाँ. Okay. Now इसी से अब relate करना, we have couple of more terms. So the same example, ठीक है, इससे हम लोग 2 terms और नए ऐड करेंगे अपनी लाइब्रेरी में, efflorescent and deliquescent. So notice करना, मान लो same salt mixture, same temperature 0 degree centigrade, but initially let's say the vessel was not evacuated. ठीक है, initially the vessel had some moisture content. Say the initial relative humidity was 5%. Now when we introduce the salt mix, what do we observe? We observe that Q is still less than K only. How did I make this conclusion? So how did you do that, sir? Sir, less than Because yet what we say, yet the reaction has not relative- started. Na? Because The at relative equilibrium, is you less than see that the 100. relative humidity was 10%. Yes, sir. Now initially if the relative humidity is 5%, and by looking at this reaction, ठीक है, जहां पर we can see H2O is on the right hand side, तो यहाँ पर I can understand कि अगर relative humidity 5% है, तो equilibrium पर ये जो salt mixture है, that would want to establish 10% relative humidity, like वो अपने equilibrium constant के हिसाब से partial pressure of H2O को लेके आना चाहेगा to 1.52 torr. अभी currently in this vessel the relative humidity is 5%. ठीक है, मुझे थोड़ा सा और मैथ्स करना पड़ेगा तुम्हारे लिए. 5% मतलब कितना पार्शियल प्रेशर H2O का? 5/100 into 15.2 torr. तो ये कितना आ गया? 0.76. 0.76. 0.76 torr. This is the partial pressure of H2O, right? And ये equilibrium कितना partial pressure लाना चाहेगा as per its equilibrium constant? 1.52. So can you now say Q is less than K? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now we understand in this situation, reaction goes forward to attain equilibrium. And we can also speak it in terms of a little bit more English, that SrCl2.6H2O is going to release moisture. Or
SrCl2.6H2O is going to show efflorescence, or SrCl2.6H2O is efflorescent. Right? ये reaction forward जाने पर क्या हो रहा है? ये SrCl2.6H2O salt moisture release कर रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, लिखो इसको. Sir, here Q is less than K only for this particular salt, no? और for this particular salt, for this particular example, like जो example continued है अभी, उसी में आपको like ये efflorescent और deliquescence term समझा रहा हूँ. Okay, sir. So basically, when the relative humidity is less than the equilibrium, therefore it's forward reaction, you mean? Done writing. So Done, sir. Okay. I got this one when you were explaining that Q is less than K. So how did you get that? यहाँ से समझना, इससे समझ में आ जाएगा. So notice करना, in case 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेसल पे है और अब इनिशियली रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है. ठीक है, दिस इज लाइक अनदर सिचुएशन. इनिशियली 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितना पार्शियल प्रेशर हो गया H2O का? 40/100 इंटू 15.2, तो कितना आ जाएगा ये? 6.08. राइट, 1.52 into 4, that is 6.08, correct, 6.08 torr. और जो इक्विलिब्रियम है वो कितना चाहता था? 1.52 torr चाहता था. So you can say that Q is more than K now. Right. So when you will introduce the salt mixture, right, the salt mixture will find that there is more vapor pressure than it would like to have. Q is more than K. So फिर reaction किधर जाएगा? Backward direction में, right? Backward direction में जाने का मतलब क्या होगा? What does this mean? The reaction going in backward direction. This SR2Cl2.2H2O will absorb moisture, will absorb H2O. Yeah. तो उसको हम लोग बोलेंगे that SrCl2.2H2O absorbs moisture और SrCl2.2H2O is deliquescent. ठीक है, ये समझ में आया? सर ये इनिशियली जो ह्यूमिडिटी है, हाँ, वो भी अब्जॉर्ब होगा. करेक्ट. Sir, so here both SrCl2.2H2O and SrCl2.6H2O both are present, no? करेक्ट करेक्ट. सॉल्ट, इसलिए मैंने बोला ना सॉल्ट मिक्सचर को मैंने इंट्रोड्यूस करा है. Okay, sir. And sir, in different initial relative humidities, the same substance can be either efflorescent or deliquescent, no? तो ये मैंने बताया ना आपको, जो SrCl2.2H2 है, that is going to absorb moisture, and SrCl2.6H2O, that is going to release moisture. ठीक है, तो वो फाइनल. Can SrCl2.2H2 release? नहीं ना. If that was happening, then I would have to write an equilibrium for that also. Okay. Then I would have to write like SrCl2.2H2O giving SrCl2.1H2O. हाँ, और 1. ठीक है, और no H2O, like depending upon उसका डेटा मिलता फिर आपको. क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया उसका, तो नहीं मानेंगे उसके ऊपर कि वो रिलीज कर रहा है मॉइस्चर. Yes.
So done. लिखा? Yes. So one minute. So I'll take a screenshot. ये ठीक है, लिख लो. In the meantime, question try करो. Try this question. सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है. हाँ, मॉड्यूल में है. Get equipped to advanced में comprehension type में. So general doubts, huh? So how much time should we spend on matrix match type questions? Like time book, because sometimes it's 4 questions and like so. मतलब 3 minutes, 3 to 4 minutes. That is the time in which you have to do it in exams. However, Okay. understanding the fact that you are learning the chapter, you are in the process of doing it in the homework. So even if you take double the time, it's okay. Okay, sense. So how many marks do we actually get 12 marks? No. How many marks do we get for matrix math? Same, 4 marks only. Only 4 marks. So why do you spend 12 minutes? I'm saying that from the practice perspective. From an exam perspective, it's the same 3 to 4 minutes only. Oh, so 3 to 4 minutes for the full matrix match. Yeah. Okay. Sir, is this a module question? Yes. So could you tell us which one so then we won't have to like write the question? Yes, and paste sir. time? It's page number 53. Get equipped to advanced comprehension type. Yeah. If the KP value is so low, then won't there be a problem in backward reaction? मतलब problem in backward, like what kind of problem? Like we studied that if KP values are too high, then usually the reactions don't be reversible. नहीं, ऐसा तो नहीं बोला मैंने. Okay. The direction depends on the reaction quotient, not the equilibrium constant. The reaction quotient relative to Yeah, equilibrium. exactly. Yeah, that's what I'm trying to say. मतलब यहाँ पे कम values हैं K की, that means जो H2O का वेपर प्रेशर रहेगा, या सॉरी H2O का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा एट इक्विलिब्रियम, वो भी कम ही रहेगा. बट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नहीं सॉल्व करके बताओ, तो करो ना सॉल्व.
Alright, पहले क्वेश्चन का आंसर आया? Yes, sir. क्या आ रहा है? A, right? So which? I think it's B. No, it's A. I think. नहीं, ये करेक्ट है. It's A, right? हाँ यार. तो काफी like simple सही है. You don't need to. So I think the mistake that you might be making is that you might not be putting in the. Yes, sir. in 4, the 7, 10 pass. route. हाँ. वो एक गलती कर दे रहे हो क्या आप? Right, so इसमें कोफिशिएंट्स को ध्यान दो ना. पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 10 है. So that goes in the power, no? And that is what then you equate to the Kp values, and accordingly you will get the pressures at equilibrium P1, P2, P3. तो यहाँ से आ तो रहा है साफ साफ that P3 is more than P2 is more than P1. So pressure of water vapor पूछा तो वेपर प्रेशर ही हो गया ना? नहीं, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर मतलब जब ये सॉल्ट मिक्सचर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, ठीक है, तो वाटर के जो वेपर्स हैं उनका क्या प्रेशर है, ठीक है. वेपर प्रेशर जो टर्म है वो हम लोग कब यूज करते हैं? जब लेट्स से वेसल के अंदर लिक्विड वाटर और उसके वेपर्स के बीच का इक्विलिब्रियम होता, ठीक है. So can you repeat that, please? लिक्विड वाटर लाइक H2O लिक्विड हाँ. एंड H2O वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम होता, ठीक है. Yeah. तब जो वेपर्स का प्रेशर होता उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं. Okay. And then what is the other thing? इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर वर्ड बोल रहे हैं. हाँ, yeah. Now, based upon the first question, second comes automatically. Which is the most effective drying agent? What will be the most effective drying agent? The one which... Last one. Huh? Right? So it should be C now. C. Drying agent का concept क्या होगा? Absorbing the best. Result in the least amount of H2O vapor, है ना? तो इन तीनों salts में से कौन सा है which results in the least amount of the vapor pressure? SrCl2.2H2. ठीक है, और sorry, results in the least amount of partial pressure of H2O. SrCl2.2H2. SrCl2.2H2. Why not SrCl2.6H2O? Because that's what is efflorescent. Correct. So as per the equilibrium, this is not going to absorb moisture. Yeah. ठीक है. The absorbing of moisture is done by SrCl2.2H2O. So that is our drying agent, no? Not SrCl2.6H2O. I didn't get this one. यहाँ पर हम लोगों ने 3 सॉल्ट मिक्सचर्स के बारे में बात करा, है ना? अगर मैं फर्स्ट वाला सॉल्ट मिक्सचर के बारे में बात करता हूँ तो वो कितना वाटर का पार्शियल प्रेशर मेंटेन करता है? 2 × 10⁻⁻⁸, yeah. ठीक है. दूसरा वाला सॉल्ट मिक्सचर कितना मेंटेन करता है? 3 × 10⁻⁻3. Right. So now, based upon these values, we see that the first mixture, the first salt mixture, when it attains equilibrium, is going to keep the least partial pressure of H2O in the vessel it is present in. Yes, sir. So it is the most effective drying agent. Yes, sir. इतना clear हो गया? अब ड्राइंग एजेंट और पार्शियल प्रेशर का क्या रिलेशन है? किसका? आपने जो लिखा है which results in least partial Lesser pressure. is better. ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब H2O, sir.
H2O का कंटेंट कम होना ना, लेस होना चाहिए. हाँ. Okay. हाँ. Okay. Got it. राइट. तो यहाँ पर अब इस सॉल्ट मिक्सचर में अगेन देन आई एम आस्किंग दैट विच इज द वन, SrCl2.6H2O और SrCl2.2H2O, किसको मैं ड्राइंग एजेंट बोलूँ? So on the right, 2H2. 2H2O, sir. This is the one that is absorbing the moisture. Yes, sir. हाँ, it is. Call this one as the drying agent, not SrCl2.6H2O. We can also see this like जिसका relative humidity कम है. Yes, of course. The same thing then. And then the last question. So 50%, right? हाँ. Yes. Correct. So just a minute. Right. So यहाँ पे calculation करके आया 50%. So vapor pressure is when we take an evacuated container and we place H2O liquid, and then at a particular temperature, the pressure of H2O gas that we attain is called vapor pressure, right? Correct. And when in a vessel which had some air or something in it, pehle se, when we introduce a salt which can, which has what is it called, water of crystallization, and then if the salt releases or absorbs H2O, then the partial pressure of H2O in that air, finally when equilibrium is attained, that is called partial pressure, right? Correct. Okay. So I don't understand आपने second question में drying agent कौन सा है, कैसे figure out किया? Drying agent मैंने तीनों salts में पूछा जा रहा है कौन सा drying agent है better, है ना? तो मैंने तीनों salts का सुनिए, अब वो कंपैरिजन समझा मुझे, बस आपने SrCl2 6H2O और SrCl2 2H2O में कैसे डिसाइड किया वो नहीं समझा. ड्राइंग कौन कर रहा है? जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, तो इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से कौन मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है? Which one can absorb moisture better, na, basically? At equilibrium, SrCl2 is releasing H2O, but NHS is releasing H2O. Na? This is going to absorb H2O. Okay, at the same rate. Yes, sir. Got it. ठीक है. Sir, Thank you. So how did you get 1.52? 1.5 Multiply by 760 ना. और ATM को टॉर में कन्वर्ट किया ना. Okay, अच्छा. क्योंकि दोनों ऊपर नीचे जब डिवाइड करना है तो सेम यूनिट्स में करना होता है ना. Yeah. Good. ठीक है. तो ये इसका थर्ड वाले का आंसर आया 50%. Yes, sir.
Yes, got it. ठीक है. So this was, There are two more parts to the question. sorry, Two more parts to the question. two more parts to the question. No, The comprehension 5 questions का है. हाँ हाँ, तो बाकी के तो आप कर लोगे ना. हाँ, I mean, yeah, it's not hard. वो भी मैं करवाऊँ. No, sir, we do it. करना है तो कर सकते हैं. Let me see क्या है. The fourth one is easy. The fifth one is a little different. Let me see. क्या है fourth और fifth part? कहाँ पर गया fourth part and fifth part? मोल का रेशियो तो वही होगा ना जो उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो है. So this concepts. Fourth question जो है, at what relative humidity will Na2SO4 be deliquescent? तो ये above 50%. अब उल्टा हो जाएगा ना. Below 50% it was Na2SO4. Yes. तो ये ऊपर से ही आ जाएगा below 50%, है ना. Okay. Yes. From above calculation. And then the fifth part. So it should be above, no, not below. Yes, above. Because in the third one we found efflorescence. Here it's deliquescence. Oh sorry, yeah, my bad. Above बोला और टिक मार्क कर दिया. Above 50%. ठीक है. Then fifth वाला, the mole ratio of water vapor. तो V, T constant है तीनों केस में. तो moles is proportional to partial pressure, right? So जो ratio partial pressure का है वही ratio moles का होगा, है ना. E? तो इसमें कितना आ जाएगा ये? 1:15. So option D becomes correct, no? तो D आ जाएगा. हाँ, D होगी. तो हाँ, D ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now, Sir, can you let's move on explain to me the the fourth one? Please, one. फोर्थ वाले में ये पूछा है ना, relative humidity, right? जहां पर Na2SO4 will be deliquescent. तो Yes, यानी sir. कि इसका मतलब Q greater than K होना चाहिए ना. Yes, sir. रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए. तो अब इक्विलिब्रियम पर 50% relative humidity था. तो अगर उससे ज्यादा relative humidity होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ना. Na2SO4 deliquescent शो करेगा. Yes, sir. Got it. Yes, sir. In the fifth question, what have you written? Moles is proportional to partial pressure because the volume and temperature are same for all the three vessels. Yes, sir. तो जो रेशियो पार्शियल प्रेशर्स का है वही रेशियो मोल्स का होगा, है ना. Yes. Okay. Now this completes of, you can say, half of the chapter, 50% of the chapter. ठीक है. अब you can assume or you can understand that we are going to discuss the second half of the chapter, where we'll be primarily focusing on factors affecting equilibrium. So first half जो था, that was gone in understanding what is equilibrium and thoroughly analyzing equilibrium through numerical questions. इनिशियल दे दिया अमाउंट, केसी केपी दे दिया तो कितना एक्सटेंड होगा, कितना इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ लेट्स से वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर वाज सम रिएक्शन
and as per its equilibrium constant, it say has an alpha of say 10%. Okay, but we want the alpha to be more. We want it to be say 90%. So what are the factors like pressure, temperature, volume, moles, etc.? What are the factors we can use to influence that equilibrium, to shift the equilibrium forward or shift the equilibrium backward? So that is what we are going to now focus on. So, a Now, question. So when you see factors affecting equilibrium, so other than shifting the equilibrium backwards and forwards, what other part of equilibrium are we affecting, like pressure, moles? तो अब वही तो पढ़ाऊंगा ना मैं. मतलब जब मैंने टॉपिक का नाम लिखा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो ही तो मैं आगे जा पाऊंगा ना. Yes, fine. तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखो. So yes, you can go ahead. So like when you see factors affecting equilibrium, I thought you were talking about the factors that affect it, but like not what is being affected. Yeah, not everything. Now, अब notice करना that this topic is also called as LCP, which stands for, अब मुझे pronounce करना तो नहीं आएगा, but ठीक है, Le-Chatelier's principle. Yes, sir. Le-Chatelier's principle. Okay. So पहले मैं आपको statement लिखवा दूंगा that what does the statement look like. Of course समझ में नहीं आएगा आपको, खूब सारी इंग्लिश है उसमें, बट जैसे जैसे मैं आपको फैक्टर्स एक एक करके बताता जाऊंगा तो आई विल रिविजिट द स्टेटमेंट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, देन एक एक करके हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे. ठीक है? Yes. Sir, I have a general doubt about solving questions. हाँ बोलो. Sir, which value of R to use while solving, 25/3 or 1/12? Depends what units you are working with. तो अगर हम लोग R का units ध्यान करें, that 25/3 comes with what units? SI units, joule Yes, per sir. mole Kelvin. And जो 1/12 value है, that comes with ATM liter per mole Kelvin. Yes, sir. तो अगर मान लो प्रेशर, वॉल्यूम ये सब ATM लीटर में दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R दैट वी शुड प्रेफर? 1/12. बस तो आंसर आ गया तुम्हारा. Okay. ठीक है, लिखा सबने स्टेटमेंट? Just 2 seconds. done. All right. Now let's try to understand the statement in the context of factors. तो पहला factor हम लोग लिखेंगे, which is the effect of concentration. So notice करना, initially मेरा system equilibrium पर है, Q is equal to K. Okay, for example, let's say N2 gas plus 3H2 gas giving 2 ammonia gas, right? This is at equilibrium. Ab I am going to say add reactants. ठीक है, मैंने से N2 का और मोल्स या और पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया. ठीक है, मोल्स बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया. Then what will happen to the equilibrium? So LCP says, ठीक है, that if a change is applied to a system at equilibrium, then
there is going to be a new equilibrium. ठीक है, बट कैसे आएगा वो इक्विलिब्रियम? उसके लिए एलसीपी कह रहा है that the shift happens in that direction which can minimize the effect of change. तो खूब सारा इंग्लिश है, यहां पे आप समझने की कोशिश करना. अगर मैंने N2 डाला, right, that is my change. So what will the system want to do? It would want to minimize the effect of change. How will it minimize the effect of change? अगर मैंने N2 डाला तो ये इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? इस N2 को कंज्यूम करना चाहेगा. Yes, sir. That means For a new equilibrium will be attained by shifting in the forward direction. That is what LCP ka principle is subjectively highlighting us. You can also understand this from a numerical perspective. ठीक है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से नोटिस करना ज्यादा आसान होता है. एलसीपी का स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा इंग्लिश है, बट यू कैन सिंपली कंपेयर क्यू एंड के. ठीक है, के तो जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, है ना. व्हाट विल हैपन टू क्यू? क्यू इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. अब अगर मैं रिएक्टेंट्स का अमाउंट बढ़ा दूंगा तो क्यू का अमाउंट क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा तो क्यू कम हो जाएगा ना. That means Q will become less than K. Q becomes less than K, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Equilibrium will shift forward, like the reaction will shift forward and attain new equilibrium. So we say, in short, that equilibrium shifts forward. समझ में आई? Yes. So, but basically equilibrium means that every time a certain reaction happens, the concentrations of the reactants and products will attain the same ratio. So नहीं, ऐसा same ratio नहीं है. They will. So isn't that what Kp is? And I mean K. So when you use the word same, okay, that is a bit confusing. So you should say whenever equilibrium is attained, the expression of K is satisfied. Yeah. So then it just makes, it's just common sense that this will proceed in the backward direction when N2 is added, forward direction when N2 is added. Yeah. So then what is the thing being done by the system to minimize the effect of change? What does that mean? The change was that you added the reactant, no? No. So how does it minimize the effect of that change? It What consumes is the the effect reactant. of the change? It consumes the reactant. So then why is this even useful? That is just common sense. It will have to consume the reactant to attain equilibrium. So this LCP is common sense only. However, the statement is like an encompassing statement across various factors. What does that mean? ठीक है, so ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ statement applicable है जब मैं concentrations के बारे में बात कर रहा हूँ. Even when pressure is being changed or temperature is being changed, this statement encompasses all the factors that So it's how a the universal equilibrium statement, will no, basically. behave. That's okay. ठीक है, ये statement तो लिख ही लिया था सबने. Yes, sir. इसको हम लोग fill up कर सकते हैं. So Q decreases. No, increases. Products is increased. Chat. Oh, okay. So why is it necessary to bring some change when the equation is at equilibrium? नहीं, वो हम चाहते हैं ना, हमें like चूल है. अच्छा, okay. मैंने बोला ना कि मान लो रिएक्शन जो था वो 10% पे आके इक्विलिब्रियम अटेन करके आना, मतलब कि नहीं भाई मेरे को तो 90% चाहिए. तो how can I shift that equilibrium? Yeah. Assume you are owning what we say. हाँ, मतलब तुम्हारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है
हमें प्रोडक्ट बनाना है, अभी थर्मो ने तो बोल दिया कि भाई 10% से ज्यादा नहीं बनेगा, तो तुम बोलोगे कि अरे ये क्या बात हुई, कुछ तो जुगाड़ होगा। तो एलसीपी अंकल आए, उन्होंने बोला कि ये लो बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। So these are the same factors that we did in 10th. These are the, I don't know what factors did you do in 10th, but yeah, of course, science will not change. Maybe a couple of more things you will get to know. Definitely not less. So what do you mean by equilibrium shifts forward because the value of the equilibrium constant is constant? Correct. Equilibrium Rate of constant is not. Reaction कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? मतलब the concentration of the amount of product that you get will be more now. Yes, वैसा. Okay. अभी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैं कराऊंगा आपको, तो दैट विल प्रोवाइड यू इवन मोर क्लैरिटी. So यहाँ पर इफ वी ऐड प्रोडक्ट्स, देन जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस Q का वैल्यू बढ़ जाएगा. Yes, sir. Q will become more than K, and if Q is more than K, then equilibrium किधर शिफ्ट हो जाएगा? Backward. If I remove products, ठीक है, मेरा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर कम कर दूंगा. न्यूमरेटर कम करूंगा तो Q का वैल्यू कम हो जाएगा. Q will become less than K. Equilibrium will shift again forward. If I remove reactants डिनोमिनेटर में थे ना Q के एक्सप्रेशन में, तो if I remove reactants, I am decreasing denominator, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Q more than K हो जाएगा. Equilibrium will shift in the backward direction. Right? ठीक है. हाँ, श्रेय पूरा सही था तुम्हारा. वेरी नाइस. सर चैट बॉक्स में भेजना था क्या? हाँ, मतलब ठीक है, काफी सारा लिखना पड़ता है. क्या ही भेजने का? सेम थिंग 10th में किया है. ठीक है. अच्छा, इसमें एक नोट लिख लेना, that this is not applicable in case the reactant or product is liquid or solid, because उनका एक्टिविटी हम लोग कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं. तो अगर आपने लाइक बड़ा टुकड़ा सॉलिड का डाला या छोटा टुकड़ा सॉलिड का डाला, वी डोंट डिफरेंशिएट ना, वी से द एक्टिविटी इज वन ओनली. तो फिर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दोज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, वी से इट डजंट मैटर. ठीक है, लिखा सबने ये? ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स लुक एट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. And when we are going to look at this numerical question, understand the modified format of analysis. ठीक है, आप लोग सॉल्व मत करना. Let me solve this question for you, because there would be a change in the approach that we have been doing for our regular questions. So ये FBS का क्वेश्चन 40 है ना? Yeah, FBS. Yeah. So you've written 800 degree Kelvin.
हाँ वो 800 केल्विन है, थोड़ा बहुत टाइम 800 degree Kelvin. It's given like that in the textbook also. I know, it's too funny. ठीक है, ऊपर का लिखा सबने, इतना लिख लिया? Yes, sir. Okay. Now, has everyone read the question? Yes, sir. One sec. Yes, sir. Okay, so you can see how this question is related to the topic. Initial equilibrium पे SO3 के 5 मोल मिल रहे थे, ठीक है, but we wanted more SO3. So what we did was we added reactant, we added O2. So question पूछ रहा है numerically that how much O2 must be added in order to get 5.2 moles of SO3 rather than 5 moles, right? So अब किस तरीके से हम लोग रिएक्शन देखेंगे, करेंगे, वो आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल. So we'll modify our format. What was our original format? Initial, then reactant upon product, then equilibrium. Equilibrium. Correct. तो अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उसको, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या है पहले वो नोटिस करेंगे. तो यहाँ पर 0.5 मोल्स ऑफ SO2 है, 0.12 मोल्स ऑफ O2 है एंड 5 मोल्स ऑफ SO3 है एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है. दिस इज ऑल इनिशियल इक्विलिब्रियम. तो इससे मुझे Kc का डेटा मिल जाएगा. वैसे तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट काम आ सकता है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Okay. Then what is the disturbance? The second row I have written dist. Dist stands for disturbance. So what is the disturbance that we are doing to this equilibrium? Adding O2. Adding O2. We are adding O2. O2. कितना वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. So let's say plus x. ठीक है, that is the disturbance. अब इसकी वजह से शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा रिएक्शन? Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट को मैं कैसे लिख देता हूँ कि मान लो इसके y मोल्स कंज्यूम होंगे, तो इसके y/2 मोल्स कंज्यूम होंगे और इसके y मोल्स प्रोड्यूस होंगे, राइट. कोफिशिएंट्स के हिसाब से लिख दिया मैंने ये. Yes. अब न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा. न्यू इक्विलिब्रियम पे ये 0.5 माइनस y होगा, ये 0.12 प्लस x माइनस y/2 होगा और ये 5 प्लस y होगा. तो ये एनालिसिस भी समझ में आया आपको फॉर्मेट के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Sir, can you explain again how did you write the shift part? हाँ, शिफ्ट इज बेसिकली यहाँ पे हमने O2 ऐड किया ना, तो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन. कितना फॉरवर्ड जाएगा हमको नहीं पता, राइट. सो वी डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल्स. So the So, but only we know. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि से Yes, sir. I minus got y it. moles What did minus y/2 moles minus y/2 की तरह बिकॉज का कोफिशिएंट हाफ है. half is really? Sir. 5 plus y equals to 5.2 moles, right? करेक्ट करेक्ट. तो Yeah. मैं पहले एनालिसिस कर लेता हूँ, even if it requires me to variables. Now I start thinking about equations. So what is the data that we have to solve for x and y? एक तो आपने बहुत फटाफट आइडेंटिफाई करा that 5 plus y is 5.2. That is given in the question ना.
Yes, sir. Yes. तो ये तो एक इक्वेशन हो गया. Is there another equation that we can write? KC का. KC का, yeah. Perfect. So Kc का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना. Yes, sir. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. तो इवन द इनिशियल इक्विलिब्रियम का डेटा सैटिस्फाइड केसी का एक्सप्रेशन एंड द फाइनल इक्विलिब्रियम का डेटा शुड आल्सो सैटिस्फाई द केसी का एक्सप्रेशन. So based on that we get the second equation. Solving both we get x and y. Clear है? लिखो इसको. So, like the previous analysis and this analysis is basically nearly the same. Like the basic logic behind everything is the same. So there's nothing different. तो इसलिए बस मैंने मॉडिफाई करा ना, हल्का सा मॉडिफाइड फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस है अपना, where we clearly highlight what is the disturbance that happened, what is the shift and new equilibrium. Now we just compare both the cases, right, and get x. Because y to we found 0. So we solve it right now. मतलब ठीक है, सॉल्व करोगे तो. Just give us 1 minute, sir. We'll do it. Sir, in reactions where heat is released or absorbed and temperature changes, Kc will also change, no? हाँ, but as we are doing, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि the reaction is happening at a particular temperature. ठीक है. So let's say for example room temperature पे आपने SO2 और O2 लेके आया, रिएक्शन करवाया, अब जो भी हीट रिलीज होना था, अब्सॉर्ब होना था, वो हो गया. ठीक है, सराउंडिंग इज वास्ट. तो अल्टीमेटली वापस से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ गए. एंड देन वी आर डूइंग आवर एनालिसिस. Okay, sir. नहीं, y तो आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से दिव्यांश, बट आपको तो x पूछा है ना क्वेश्चन में. But isn't this too much of maths? Yes, sir. It's very. Not that much, man. It's very easy, sir. Solve now first. वो ठीक है, आपको स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व करना है, ऑफ कोर्स, लाइक यू टेक स्क्वायर ऑन Square बोथ both साइड्स, sides. Exactly. देन इट बिकम्स इजियर टू वर्क विद. ठीक है, बट एनीवेज आई डोंट वांट दैट टाइम टू बी स्पेंट इन सॉल्विंग पर्पसेस. अभी इतना समझ में आया सबको? लिखा सबने? अच्छा. Yes, sir. I would want to add an extra piece of knowledge over here is to graphically understand what happened. Okay. Let's say if I ask you to draw a graph of moles versus temperature. Sorry, not temperature, sorry, moles versus time. Okay. And आपको मैं SO2 और O2 का, ठीक है, और SO2 and O2 I am asking you कि आप ग्राफ बनाओ. ठीक है, कैसा रहेगा? इनिशियली कितने मोल्स थे? Moles of SO2 plus moles of O2 is the y-axis. नॉट सम, दोनों का अलग अलग ग्राफ. अच्छा. ठीक है, SO2 का भी बनाओ और SO और O2 का भी बनाओ. ठीक है, टेक एन अटेम्प्ट, देन आई विल शो यू. ठीक है, टेक अ रफ अटेम्प्ट because I am pretty sure that you will make something wrong only.
Done. Bro, think it a little bit and give us time. But he's done. I'm done. So, but how can we do this? Because we're not concerned with the rate of reaction here. Good. I was hoping someone asked that question. ठीक है. Still, I'm asking you to take a rough attempt at it. Okay. So do we have to consider the time in which is not equilibrium also? हाँ, but अब इनिशियल से न्यू तक जा रहे हैं तो बीच में नॉट इक्विलिब्रियम वाला भी तो फेज आ ही रहा है ना. Yes, sir. एक मिनट और वेट कर लेते So, हैं, डिस्कस I करेंगे. think I got the answer to the rate of reaction question also. I finished the graph. So we're not concerned with the rate of reaction, but here the moles are changing, and with time the reaction occurs. So like the rate of reaction does not come in only. Rate of reaction is what? So here moles are just changing with time. The rate of reaction does not really come into play here that much. No, it does come into play, and that is what we are going to study in. How we considered with this, like how does this speed really matter? Why we only need to know moles versus time. So time is speed. What? All right. So अब यहाँ पे देखो कैसा होगा. So on the y-axis, you have moles. On the x-axis, you have time. Time I have divided into initial equilibrium. Then there is a disturbance that happens at some point in time. As a consequence, there is a shift that happens for some time. And then a new equilibrium is attained after sufficient time. ठीक है, तो ये x axis समझ में आ रहा है as per our format? Yes, sir. Okay. Now, let's say I talk about सबसे पहले O2. तो O2 के इनिशियल मोल्स कितने थे? 0.12. ठीक है, तो ये 0.12 मोल्स हो गए मेरे O2 के. एंड ये मोल्स कांस्टेंट रहेंगे टिल द टाइम आई हैव इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम, है ना? यस सर. ओके, देन डिस्टर्बेंस हुआ. डिस्टर्बेंस पे क्या होगा? 0.34. सडनली अब्रप्ट चेंज आएगा O2 के मोल्स में. Yes, sir. प्लस x, यानी कि प्लस 0.34 कर दूंगा मैं, तो 0.12 प्लस 0.34 कितना हो जाएगा? 0.46. तो करीब करीब यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है, 0.46 है ना? Yes, sir. तो ये मेरा O2 के मोल्स हो गए. अब्रप्ट चेंज आया ये. ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा दैट यहाँ पर वी हैड अब्रप्ट चेंज ड्यू टू डिस्टर्बेंस. ठीक है, जो डिस्टर्बेंस था उसमें हम लोगों ने मोल्स ऐड करे थे. अच्छा, अब इसके बाद में शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. एंड व्हाट इज द फाइनल मोल्स ऑफ O2 दैट आई एम गेटिंग? 0.36 है ना? आपने यहाँ पे करा होगा 0.12 प्लस x माइनस y/2, तो 0.36 आ रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है, 0.36. दिस विल बी द न्यू मोल्स ऑफ O2. You can say moles of O2 at new equilibrium. ठीक है, और ये स्टेडी रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे.
है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ का जो पार्ट है, लाइक यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्ट करता है, दिस इज वेयर यू वुड बी हैविंग अ डाउट. Will it be a straight line, right? Will it be a curve? We don't know, because that is what chemical kinetics is, that how with time change is going to happen. ठीक है, तो अभी that is not under our purview, तो मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, I'm just drawing a rough graph. ठीक है, I'm just drawing a curve over here. You might ask me questions कि straight line क्यों नहीं है, या कम स्लोप का ज्यादा स्लोप का क्यों नहीं है. तो you are right, that is something which kinetics will tell me the answers to. ठीक है, all I can highlight over here is, or I would want to highlight over here is that the shift, ठीक है, is represented as a gradual change. ठीक है, generally shift is represented as gradual change. ठीक है, अब आप SO2 के बारे में सोच रहे थे, तो SO2 में कैसा रहता है? स्टार्टिंग में 0.5 है. यस सर. ठीक है, डिस्टर्बेंस पे क्या अब्रप्ट चेंज होगा यहाँ पे SO2 में? Yes, sir. नॉट रियली. डिस्टर्बेंस SO2 का थोड़ा ना हुआ था. हाँ सर, नहीं होगा. नहीं, disturbance. डिस्टर्बेंस तो O2 का था ना. वी एडेड मोल्स ऑफ O2. There was a shift. There was. ठीक है, तो इसके बाद शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होके क्या वैल्यू आ रहा है SO2 का? 0.5 माइनस y, यानी कि 0.3 है ना. समवेयर यहाँ पे आ जाएगा 0.3. तो अब ये कैसा रहेगा? अगेन आई डोंट नो, स्ट्रेट लाइन रहेगा, कैसा रहेगा, बट अभी के लिए मैं कैसा कर देता हूँ इसको, एक रफ कर्व के मैनर में कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है, समझ में आया? Yes. So in this chapter, we are only dealing with this, the final, and this. We're not dealing with the middle part, right? Correct. That's what We are not dealing. That is what that's I what I was wanted trying to to. say earlier. So. Correct. ड्रॉ करा सबने? Like just a Sir, second. wait, sir. करो करो, जल्दी जल्दी करो. बन गया. ठीक है, Sir, have we done percentage dissociation? that is Oh. It's alpha into 100. हाँ, Yeah, same as the- alpha only. Yeah, that's alpha. परसेंटेज में मेंशन करना है तो यू मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, So from thermodynamics perspective, if you so to get the gradual change, so how much energy is required, so or released or absorbed, so like रहेगा ना, रिएक्शन का डेल्टा H मिल जाएगा. we can find out the direction, then delta G.
No, so you will need thermodynamic data for it. Na? Delta H of the reaction will tell you. Yes. कितना heat release होगा, कितना heat absorb होगा at constant pressure conditions. So can you scroll up? Yeah. Done so. So 1 minute. ठीक है, फटाफट. I just want to teach one more concept before we reach the end of our discussion today. Done. So, in the start, a few of us asked if gaseous state can be added. So, is it being added or not? No. Okay. Now, यहाँ पर अब notice करना next factor, that is effect of pressure on the system. So to understand the effect of pressure, I will proceed in the same manner जैसा मैंने ऊपर किया था. One will be a subjective way of thinking and the other will be a numerical way of thinking. Now, I am always comfortable with the numerical way of thinking because it does not create confusions in future. मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ. So पहला तो है that is the LCP, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट सीखा था ले चैटलियर्स प्रिंसिपल का. What it says is, मैं एक बार दोबारा वो स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, you don't need to write the statement. I'm just going to put it here for reference. Right? क्या था statement? The statement was, if a change is applied to a system, then the system moves in that direction in which it can minimize the effect of change. So let's say there is this equilibrium, ठीक है, and ये जो vessel है जिसमें equilibrium attain हो रहा है, मैं उसका pressure बढ़ा देता हूँ. ठीक है, that is my change. Change is pressure बढ़ा दिया. तो अब ये LCP क्या कह रहा है? That the system tries to minimize this effect by, or minimize the effect of this change by shifting towards where? यहाँ पे अब आपको दिखेगा the answer is towards lesser gaseous moles. ठीक है, by moving towards lesser gaseous moles, the system will try to bring down the pressure, no? Yes, sir. तो यहाँ पर where do we see lesser gaseous moles? Forward or backward? Forward. Forward. Right. So यहाँ पे आपका आंसर रहेगा that if pressure increases, equilibrium shifts forward. ठीक है. This is your subjective way of understanding how the effect of pressure is going to be. ठीक है. Now, numerically भी आप सोच सकते हो. Numerically मुझे ज़्यादा आसान लगता है numerically सोचना. Where I compare Q and K. तो initially Q और K बराबर रहेगा, है ना? Then what happens? K is the same, right? K depends only on temperature, so K is not changing. Yes, sir. What will happen to Q? So how can Q we predict? is going Decreases. to change. How is Q going to change? Can I write Q as Qx into P total raised to the power of delta Ng? Yes, sir. Now, when I change the pressure, ठीक है, तो depending upon delta Ng, यहाँ पर can you see that delta Ng is negative? Yes. Yes, sir. तो ये जो Qx है वो Q is equal to Qx upon Pt square हो जाएगा. Yes. Now if I increase the pressure, तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. तो Q less than K हो जाएगा, तो equilibrium किधर shift करेगा? Forward. ठीक है, so that's the numerical way of analyzing. मैंने दोनों लिखे हुए हैं. I will show the numerical way also written mentioned below. पहले आप ये subjective तरीका लिख लो.
So could you scroll down? So scroll down. Wait. लिखा सबने इतना? Yes, sir. So one So the mathematical analysis, which is based upon this expression QP is equal to QX, P total raised to the power of delta NG, that would certainly depend upon the value of delta NG, right? In case it is positive, then P total is in numerator. And if P increases, then Q increases, Q becomes more than K, and the shift is in the backward direction. If delta NG is positive. If delta NG is negative, then P is in the denominator. And then if P increases, Q becomes less than K, shift is in the forward direction. And if delta NG is 0, then there is no effect. ठीक है? Yes. So can you scroll up for a second? We write this table also, right? So you can scroll down if you want. Hello, sir. You can scroll down now. So, so when it starts physical, so you said you teach at Dadar as well as Andheri. So, like I'm in Dadar pace. So will you still be teaching Dadar pace and Andheri pace kids, or what will happen? So वो अभी uncertain है. I am also not 100% sure that how that is going to be. But probability wise, based on like past trends, most likely I will have the classes at Andheri and Dadar. So I mean, like, so where will you teach, Andheri or Dadar? So both. They both. So it'll be live stream from Andheri or? No, offline. So if we ask our center head for you, will that increase the chances of you teaching us? Yes. See, you are always open to have discussions with your center heads. That's never a problem. However, like the final timetable that is, I think, is being worked out upon how the scheduling is going to be. सर वो पर सुनते हैं क्या? सुनते हैं ना, of course. Their pace is student centric in that way. सर फिर वैसे पवई भी आ जाओ. सुनते पूरा है. एक्ट कितना होता है वो चीज का डिस्कशन लाइक हमें पता पड़ता है बाद में. Like the Indian government. Yes. And so the good teachers like throughout pace, for example, so TKM sir from Navi Mumbai, I think he told us, and then VGP sir from Pune. Will they live stream lectures or what? No,
it's offline now. So Offline whoever only, comes मतलब offline will offline. teach you. Okay. And how does it work? I mean, How- on offline also, are there Yeah. like batches? Mm-hmm. There are. Okay. How many batches are Oh, there? who decides? Yeah, yes. Actually. वही सब Yes. तो अभी चल रहा है ना. That is what I'm saying कि देखो तुम लोगों का, see what you should, as like students, you do not have the visibility in terms of like who stays where, which classes are going to be taken. What you can simply do is put across your request. That's it. अब उसके ऊपर जबरदस्ती का डिस्कशन, तुम्हें थोड़ा टाइम टेबल बनाना है. Like you don't have to manage. ठीक है. Yes. You put forward your request, and then accordingly how things will work out, things will happen. Yes. Okay. Acha. Then after pressure, I wanted to talk about volume also, but ठीक है, let me put this or push this to the discussion tomorrow. So कल, based upon this, I will give you a question and we'll continue with the other factors. So, Okay, sir. Thank you. किसी को और कोई question है? Any other If doubt? you're done writing, we can leave. Yes, हाँ. sir, I have doubt. Okay, sir. so, Thank you. so don't end the meeting. Sir, I have So, doubt. one second. Sir, I have a doubt in thermodynamics. बोलो. Sir, if a refrigerator is kept open, the room will heat up or cool up. So it should be none now, because what the refrigerator does is it takes the heat from the refrigerator and throws it into the room. So then technically it's taking the heat from the room and throwing it back into the room again and again. हाँ, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ना. मतलब you will have to think about what is your system. ठीक है. If your system is the room, so what is going to happen? The refrigerator takes the heat from the room and throws it back into the room because the refrigerator is The open. refrigerator is going to take electrical work. ठीक है, कुछ plug point होगा, वहां से आपका refrigerator connected होगा. ठीक है. Yeah. Right. Now the thing is, in normal circumstances, when the room is closed, Yeah. and the refrigerator is also closed, okay, room I would say is insulated, तो कैसा होगा? ये जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की चीजें हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, एंड बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है. द रेफ्रिजरेटर वर्क्स इन दिस वे दैट इट यूजेस द इलेक्ट्रिकल वर्क टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन. Yes. ठीक है. अब अगर आपने रूम का सॉरी इसका रेफ्रिजरेटर का गेट खोल के रख दिया, ठीक है, तो भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल वर्क तो लेता रहेगा. ठीक है. तो ओवरऑल देयर इज गोइंग टू बी एन इनपुट. अब वेयर इज गोइंग टू बी द आउटपुट? द आउटपुट इज गोइंग टू गो इन द रूम ओनली. तो वापस से रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना. I understand that, but then technically it's cooling down the air in the room and heating it up also. No. So अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया that the refrigerator is designed to increase the or decrease the temperature inside it, but since you have opened it, तो अब यहाँ का अंदर और बाहर का टेम्परेचर हमेशा बराबर हो जाएगा ना. सर तो उसकी गैस भी तो मतलब नॉर्मली भी अपन कहें तो उसकी गैस वेस्ट होती है ना उसमें. तो नहीं, गैस वेस्ट नहीं होती है, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है. गैस तो बस अंदर सर्कुलेट होती रहती है. रेफ्रिजरेटर खराब नहीं होगा उससे? नहीं, ऑफ कोर्स खराब होगा, because it is not designed to work in this manner. So it's not an air conditioner, it's a refrigerator. So can you please explain this table again? What you have exactly done in here? इस टेबल में After this mathematically topic you have write and what you have explained here, can you please re-explain? बस इतना ही है कि ये Q का एक्सप्रेशन आ गया. अब डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एनजी, you will know
कि ये जो प्रेशर है ये न्यूमरेटर में लाया करेगा कि डिनोमिनेटर में लाया करेगा. इफ इट इज इन न्यूमरेटर एंड आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्यू बढ़ जाएगा, क्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड चला जाएगा. Okay, sir. एंड वाइस वर्सा इन दिस केस. Yeah. सर जब रेफ्रिजरेटर क्लोज होता है तो फिर उसकी हीट कहाँ पे जाती है जो रिलीज करता है रेफ्रिजरेटर? रूम में. रेफ्रिजरेटर के पीछे कभी हाथ लगा के देखा है? बहुत गर्म होता है. तो फिर सर Yes, जब sir. आप फ्रिज खुला छोड़ देंगे तो हाँ. द प्रोडक्ट्स इनसाइड द फ्रिज दे विल गेन द हीट फ्रॉम द रूम. ओके. एंड वो अपना जो डिक्रीज टेम्परेचर मतलब कोल्डनेस है वो रूम में छोड़ेंगे, तो टेक्निकली तो डिक्रीज होना चाहिए ना टेम्परेचर. नहीं. सो यहाँ पर व्हाट यू आर थिंकिंग और गिविंग आंसर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉन स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम की बीच में क्या हो रहा है. थर्मोडायनेमिक्स बीच वाली चीजों के बारे में बात नहीं करती है. थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इवेंचुअली आफ्टर लॉन्ग इनफ टाइम जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा. ओके. Then the temperature will decrease. The Yeah, temperature of the room will increase. decrease because नहीं. the temperature of the fridge will try to maintain that 0 degrees C or whatever is there inside. And assuming that the temperature, it achieves equilibrium both inside and outside, temperature should decrease, The refrigerator will not be able to do that now because you have kept it open now. Okay. So So then it's nice then. whatever electrical work it is taking in, right? क्या हो रहा है उससे? ओवरऑल अब जो मेरा सिस्टम है वो रेफ्रिजरेटर प्लस रूम वो हो गया ना. Yes, sir. So basically, work is being done on the system. So, I mean, if you look at it from that perspective, it's very simple. Work is done on the system. System is insulated. Internal energy increases. Temperature increases. Correct. Right. But so okay. I still don't understand it fully how it's happening, but I guess this is reason enough. So then I'm sending a question on the group. I sent it. नहीं अभी नहीं. I have So another. sir, it's a very small We will thing. So it's a discuss it very later. so No, it's I a have very another very class small after thing. it. Okay, so I'll I ask you have another verbally. class after it. We'll discuss it in the doubts. So remember we did those questions where a hot body and a cold body were kept in contact, and so we must solve in Kelvin now. We must take all temperatures in Kelvin, right? Yeah. Okay. Thank you. ठीक. All right guys. कल डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं.